हाय बच्चों, आज हम आप लोगों का जेई फिजिक्स मेड इजी यूट्यूब चैनल को स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में 2.10 डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। ओके, तो ये टॉपिक 2.10 करने जा रहा है। ठीक है, तो वीडियोस अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स है तो कुछ कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जैसा वीडियोस अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट देखेंगे 2.10 डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला? डायमेंशनल फार्मूला अभी डायमेंशनल फार्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला? डायमेंशनल फार्मूला क्या है? सो ये है द एक्सप्रेशन which shows how and which of the base quantities represent the dimensions of a physical quantity. Dimensions of a physical quantity. So the expression which shows how and which of the base quantities represent the dimensions of a physical quantity. अगर एग्जाम्पल ले लेंगे तो सपोज वॉल्यूम, द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम इज L cube है. So this is the expression formula m0 L cube T0. This is the formula. Okay, the dimensions of volume is m0 L cube T0. Okay, अब देखेंगे what is dimensional equation. The equation obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula. That's all. That is known as dimensional equation. So for example, वॉल्यूम का देखेंगे, वॉल्यूम को इक्वेट किया है m to the power of 0 L cube T to the power of 0. हो गया, इतना ही है. ठीक, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? अब एक मॉडल प्रॉब्लम ले लेंगे, एक्सपेक्टेड मॉडल प्रॉब्लम डायमेंशनल फार्मूला के ऊपर. ठीक है, तो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, ये पूछ रहा है ये 4 अंक के अंदर. सो फ्लक्स क्या है? एक्चुअली सॉल्यूशन में देखेंगे हम, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज एफ बाई आई एल, करंट इनटू लेंथ इनटू एरिया. ओके, सो बाय सीइंग इटसेल्फ यू कैन गिव द आंसर. Force, length and area all are length, mass and mass length time के ऊपर ही डिपेंड होता है. I is only in the bottom, means ampere current.
So ampere to the power of -1 should be the answer. So ये this should be the answer. Okay, anyhow हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है। तो F क्या है, न्यूटन, न्यूटन बोले तो kg मीटर सेकेंड -2 बाई इसका एम्पियर है, इसका मीटर स्क्वायर है। तो मीटर कैंसिल, ओके। सो kg मीटर स्क्वायर and second to the power of -2 a to the power of -1, that is mass L2 t -2 a -1. So magnetic flux, dimensional formula or dimensional equation. Okay, this is the formula, ठीक है। और इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ml2 t -2 a to the power of -1। जैसे एग्जामिनेशन में हमारे पास समय ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए देखते ही अगर शॉर्टकट मेथड है तो देख लीजिएगा, वो सबसे आसान होगा, अच्छा भी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछने का चांसेस है, तो उसका फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला के आंसर आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। इससे 2.10 डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस खत्म हो गया है। अभी तो सब्सक्राइब जैसा असाइनमेंट्स भी दे दूंगा मैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप करते जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन डाउट है तो कुछ, ठीक है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।